हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ वो आपका इग्नू का MHI 04 यूनिट 13 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलोनियल पावर्स, पोर्चुगीज, डच एंड फ्रेंच। ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं इग्नू से, उनके लिए है ये हिस्ट्री में। और ये क्वेश्चन जो है वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन नेचर एंड पैटर्न ऑफ द डच ट्रेड और डिस्क्राइब द डच पोजेशन इन द ईयर 1600 to 1680। एक्चुअली ये मैंने लॉन्ग आंसर में आपको आंसर दिया है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट नोट पूछा जाए तो आप इसको शॉर्ट में भी लिख कर आ सकते हैं। मतलब मैंने दोनों क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंसर जो है प्रोवाइड कराया है। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्टेट्स जनरली फाउंडेड द नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ द डच रिपब्लिक एज Warning Osto Show Company. This company was constituted as a result of merging with several companies. The wealthy traders of Amsterdam, Rotterdam, and Zeeland increased the base capital of this company. The charter of the State General was granted monopoly to trade in the East for next 21 years in favor of the company. Thereafter, lashed with such privilege, the Dutch East India Company founded its first factory on the Coromandel coast, which included the market of the southeast, such as the spice regions of Malacca, Banda and Celebi, and was the chief center of supplying clothes to the European market. The trade in the company located at the Coromandel coast experienced an unprecedented growth as a result of the high demands of clothes in the Southeast Asian market in the 17th century. In 1680, the Dutch and the British companies were practically responsible for the entire trade. The Dutch East India Company was the kingpin in this trade when the British East India Company led the Euro-Asian trade since 1680. But in the trades operating among the Asian countries, especially in the areas of the Coromandel coast and the Southeast Asian market, the Dutch traders completely maintained their superiority in sense wherein the 16th century the Portugal were confined to the southwestern coast of India. The Dutch and the British included the Coromandel coast, Bengal and Gujarat to their influence spreading the markets of their trade. Primarily, these new colonial powers were also confined to the coastal area, but they had established their trade centers in the internal areas such as Ahmedabad and Agra, where the Dutch powers in the 17th century was competent in the market. They utilized the power of monopoly to pay the producers of the Spice Island below the standard market price. They even utilized force and terror in order to control the silk traders and establish monopoly over the markets and the product. There was mere advancement in the value and quantity of the Euro-Asian trade. This structure of trades had contained diversities within it. India was the chief source of supply for the Dutch traders as they had a greater role in the Asian countries. The clothes from Coromandel and Gujarat was engaged for pepper and the other spices in the islands of Indonesia. The company was exporting raw silk and opium from Bengal. The structures of the Euro-Indo trades were also changed. Pepper and spices, among the main items to be exported to Europe from India, had lost its importance. In the 17th century, the share of clothes and raw silk out of the total export to Europe in the beginning of the 17th century increased from 16 to 55% by the end of the century. In addition to Coromandel, Bengal, which was the center of producing raw silk and cloth, turned into one of the main centers of production for the Dutch.
The most important feature of the Dutch trades with India was that they needed the valuable metals to buy the Indian goods. Europe was not capable to supply the Western products to the Asian market at that price, which could increase the demand for production. For the items of the Euro Asian trade, gold silver was the standard item. The remarkable aspect of this standard was that for the European traders in this trade, the benefit was earned from the sale of the Asian items in the European market instead of the European items in the Asian market. Apart from the valuable metals or gold silver, the Dutch was importing the woolen silk and other clothes and the non-valuable metals or items such as lead, iron and mercury, and at the same price also. In the Indian subcontinent, the relation between the Dutch company and the local officers was certainly mutual benefiting one another. The local officers explored the Dutch company, a solid means of economic resources to develop their economic position in the society. The immediate benefits come from the octroi, which was next to the land revenue for the Mughal exchequer. The Dutch and the British companies were trading in India like the other communities of the Indian trader, and they were free from any kind of special trade restriction. In 1606, the Dutch East India Company founded its first factory of Petapuli at the Coromandel coast. One other factory was established at Masulipatam in the same year. The second factory was also established at Pulicat in the year 1610, which was the directorate of the Dutch offices in the Coromandel coast. The Goldria fort in Pulicat was constructed in the year 1613. The governor was controlling the entire factories located at the Coromandel coast. In 1690, the seat of the Coromandel government was shifted from Pulicat to Nagapatnam on the South Coromandel coast. In Bengal and Gujarat, the Dutch and the European officers were liable for most of the trade obligation. The Dutch company had acquired an extensive participation in the Asian trade, and it separated the Dutch company from the other trading companies such as the British and the French trading companies. The Dutch East India Company utilized its superior navy and grabbed the structural resources developed by the Portuguese to control the trade activities in India. तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा वीडियो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। जिन भी स्टूडेंट्स को इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए, सॉल्व असाइनमेंट्स चाहिए या प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी, आपको उस पर सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। और स्टूडेंट्स, जो मैंने कोर्स के बारे में, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताया था, उसका अपडेट ये है कि 1 दिसंबर से MHI 01, MHI 02, MHI 04, MHI 05, MHI 06 एंड MHI 07 की क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो जो भी बच्चे एनरोल करना चाहते हैं वो अभी भी कर सकते हैं। दूसरा जो इसका प्राइस है वो ये है कि 500 रुपीज़ है पर सब्जेक्ट, और ये 500 रुपीज़ आपके 6 मंथ्स तक वैलिड रहेंगे। मैं फिर से बता रही हूँ, 500 रुपीज़ है पर सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को एक सब्जेक्ट में भी कोचिंग चाहिए या ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी अवेलेबल होगा उसको। तो अगर आप एक सब्जेक्ट का जैसे लेते हो तो एक सब्जेक्ट का 500 रुपीज़ है, तो वो आपका 6 मंथ्स तक वैलिड है। आपको हर मंथ 500 नहीं पे करने हैं, आप जो हैं 500 रुपीज़ वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हैं या फिर हर मंथ आप 100 रुपीज़ भी पे कर सकते हैं 5 मंथ के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप से है। तो अभी भी वो जो एडमिशन्स हैं वो चल रहे हैं,
और जिन बच्चों को एनरोल करना है वो अभी भी कर सकते हैं, उनको भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। और एक और चीज़, ये जो आपका जो क्लासेस शुरू होंगी ये एकदम लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 2023 में मुझे पता है कुछ चेंजेस हुए सिलेबस में, तो ये लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस होंगी। और अगर कुछ बच्चे पुराने भी हैं तो ऐसी बात नहीं है, मैं उन्हें भी क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन वो डिपेंड करता है किस बच्चे को किस टाइप की क्लास चाहिए। और दूसरी बात, सिर्फ हिस्ट्री के लिए ये ऑप्शन ओपन नहीं है। जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस में हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन के हों चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन के हों, उनके लिए भी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। तो जो बच्चे उनमें भी एनरोल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। थैंक यू।